Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Janvallabha, Girivaradhari. Jaya Radha Madhava,
राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna. So, very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Ashtaprayeshu Bhuteshu Nityam Bhagavati Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. So we discussed in our previous session some very, very important aspects of this chapter, because in this chapter we saw Lord Brahma is having darshan of the Supreme Lord, and along with the Lord he is also having darshan of the abode of the Lord. So this whole darshan, this whole vision, the Lord has revealed himself and his personal abode to Lord Brahma, and Lord Brahma is having a vision of localized Vaikuntha of the universe. And we discussed in the previous session that how the Lord is there and all his associates, they look like him. And Mother Lakshmi, she is engaged in serving the lotus feet of the Supreme Lord Vishnu, Narayan, in Vaikuntha along with all her associates. So all these are different visions which are different aspects of the Vaikuntha planet which Lord Brahma saw. Now today we'll start with text 15, shloka number 15. Dadarsha tatra khila satvatam patim Shriyah patim yagya patim jagat patim Sunandananda prabalar Pranadibhihi Swaparshadagray Parisevitam Vibhum Tadarsha tatra akhila satvatam patim Shriyah patim yagya patim jagat patim Sunandananda prabalarhanadibhihi Swaparshadagray Parisevitam Vibhum. Translation. Lord Brahma saw in the Vaikuntha planet the personality of Godhead, who is the Lord of the entire devotee community, the Lord of the goddess of fortune, the Lord of all sacrifices, and the Lord of the universe, and who is served by the foremost servitors like Nanda, Sunanda, Prabala, and Arahana, his immediate associates. So now you see here, what is Lord Brahma seeing? So here in this shloka, it is mentioned that Dadarsha Tatra Akhila Satvatam Patim. Akhila Satvatam. Satvata means pure devotees of Krishna or great devotees, Mahatmas, Satvatam. So those who are pure devotees of Krishna, they are called Satvatas. So Dadarsh means to see. So Lord Brahma saw Tatra Akhila Satvatam, entire devotee community, all the Satvatas, all the pure devotees. Whom do they worship? Krishna. So Akhila Satvatam Patim. So Lord Brahma saw the Lord of the whole devotee community, all devotees, the Lord of all the devotees, Lord Krishna. Shriyah Pati Yagya Patim Jagat Patim. He is also Shriyah Patim. Shriya means Mother Lakshmi. So he is the Pati, he is the husband of the goddess of fortune. Yagya Patim.
He is the Lord of Yajna, he is the Lord of all sacrifices, they are all meant for him. And Jagatpati, and he is the Lord of the universe. So the whole universe, Jagatpati, Sunandanand, Prabhalarahanaadibhi. So these are the different devotees, their names are also mentioned here. Sunand, Nand, Prabhala, Arhana. So these are all different names of the Lord's pure devotees in Vaikuntha planet. And Swaparshadagrahe Parisevitam Vibhum. And the Lord was served by Swaparshadagrahe Parisevitam. Parisevitam. Parisevitam means sevit. Sevit means one who is served. Sevak means one who serves, and Sevit means one who is served. So the Lord is served by all these devotees. He is the person who is served by all these devotees. Now you see, one thing which very important we need to understand here in the shloka is, you see here, because Lord is served by all these pure devotees here in his abode in the Vaikuntha planets. So what do we understand by this? That Krishna is never alone. You'll never find Krishna alone. He's always surrounded by all his pure devotees. That's what is mentioned here. You see, Akhila Sattvatam Patim, because he is the Lord of all the pure devotees, of all his pure devotees. He is the Lord of everyone. Not only of everyone, especially of his pure devotees, because Sattvatam, spiritual world or Vaikuntha planets, Vaikuntha Loka is meant only for Sattvatam. It is meant only for pure devotees. So in the Vaikuntha Loka, Lord Brahma saw Lord Krishna or Vishnu was surrounded by all his pure devotees. So what does this mean? That Krishna or Vishnu or the Supreme Lord is never alone. He is always, you will find him always surrounded by his pure devotees. He will never be alone. You'll never find Krishna alone. He will be always with some pure devotees, some of his pure devotees. So even in the spiritual world, the same thing Lord Brahma is seeing. And then he says, so the Lord of all pure devotees is present here before Lord Brahma. And then he's saying that he's also naming them, the devotees who are serving the Lord. So Sunanda, Nanda, Prabhala, Arhana. So these are the pure devotees. Their names are also given. So Krishna is never alone. He is always surrounded by his pure devotees. Because all the pure devotees, they are engaged in loving service of Krishna always. Now text 16, shloka number 16. Bhritya prasada bhimukham trigashavam prasanna hasaruna lochananam kiritinam kundalinam chaturbhujam पीतां शुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतां शुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया. Translation: the personality of Godhead
seen leaning favorably towards his loving servitors. His very sight, intoxicating and attractive, appeared to be very much satisfied. He had a smiling face decorated with an enchanting reddish hue. He was dressed in yellow robes and wore earrings and a helmet on his head. He had 4 hands, and his chest was marked with the lines of the goddess of fortune. Now you see, what is Lord Brahma saying? So he is saying, Bhritya prasada abhimukham drig asavam. So, Bhritya prasada. So why the Lord is present there? And the Lord is surrounded by all his pure devotees. Nanda, Sunanda, all these pure devotees, they are all surrounding the Lord, including Mother Lakshmi also. Right? So here it is said, Bhritya prasada abhimukham drig asavam. So Krishna, the Lord, is inclined towards his pure devotees. He is leaning towards his pure devotees, drig asavam, and prasanna hasa aruna lochananana. And the Lord is very happy. Prasanna. Hasa means he is smiling. He is very happy by the service of his pure devotees. Okay. Hasa aruna lochananam. And his eyes are like lotus petals. Hasa aruna lochan. Lochana means eyes. So the eyes of the Lord is like lotus petals, and he is completely satisfied in Puri. And Kiritinam Kundalinam Chaturpujam. And what is the appearance of the Lord? So that is mentioned here. He is wearing, the Lord is wearing Kiritinam. Kiritinam means he is wearing a helmet, crown. Kundalinam, earrings. Chaturbhujam, he has 4 hands, the Supreme Lord. Pitam Shukam Vakshasi Lakshitam Sriya. And the Lord is Pitam Shukam. He is wearing the dress, and the color of the dress is Pitam. So the Lord is wearing very beautiful garlands. He is surrounded by all his pure devotees, and the form of Krishna or Lord Vishnu is mentioned here. That what was the form of the Lord. And one thing very important which we see here in this shloka is Bhritya Prasada Abhimukham. The Lord is facing his pure devotees. He is bent towards his pure devotees. He is inclined towards his pure devotees. Very important to know that Krishna, he is always with his pure devotees, and he is favorably disposed towards his pure devotee. Although Krishna also says in the Bhagavad Gita that Samoham Sarvabhuteshu, that every living entity is equal to me. So one very important thing that we see here in the shloka is Bhritya Prasada. The Lord is, he loves his devotees and he's leaning towards his devotees. The Lord is always favorably disposed towards his devotees. The Lord always favors his devotees. And it is mentioned here, Prasanna Hasa Aruna. He is very happy. The Lord is very happy, very pleased, because all the devotees are engaged in
service of Krishna. So Krishna is very happy receiving service from all these devotees. He's very happy, he's very pleased, he's very composed. Now text 17, shloka number 17. अद्यर्हणीयासनमास्थितं परम् वृतं चतुषोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैस्वैरित तत्र चाध्रुवैः स्व एव धामं रममाणमीश्वरम्. अध्यार्हणीयासनमास्थितं परम् वृतं चतुषोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगैस्वैरित इतरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामं रममाणमीश्वरम्. Translation. The Lord was seated on his throne and was surrounded by different energies like the 4, the 16, the 5, and the 6 natural opulences, along with other insignificant energies of the temporary character. But he was the factual Supreme Lord enjoying in his own abode. So now we see here that how did Lord Brahma, he saw the Lord, how did he start discharging his duties towards the Lord, the Supreme Lord. And we also see that how Krishna was surrounded by all his energies. So these are different energies of Krishna which are surrounding the Lord here. You can see on the screen the shloka. Adhya arhani asanam. Asanam. That the throne on which the Lord was sitting, asanam, means the throne of the Lord. Asthitam param. Now who is sitting? Who is sitting on that throne? So asthitam param. Asthitam param means the Lord was seated. Param, the Supreme, is seated on that throne. So the Lord is seated on a beautiful garlanded, beautiful throne of the Lord in Vaikuntha, and the Lord is sitting there. Vritam Chatu Shodasha Pancha Shakti, and there are different potencies of Krishna who are along with the Lord, along with the Supreme Lord. All these different energies also Lord Brahma could see. Yukta Bhagay Swair Itaratra Chavudhai Chadruvai. So now Lord Brahma also saw the different opulences of people in the spiritual creation. All the different energies of the Lord are surrounding the Lord. So which are their numbers are also given. The different energies have different numbers. So Chatu means 4, Shodasha means 6, Pancha means 5, and Shakti be Yuktam Bhagay Swair Itaratra Cha Adhruvai. So the Lord is surrounded by his different potencies, his different energies.
So the Lord is surrounded by these 4, 6, and then 5 different energies. So which are these 4 energies which Shukdev Goswami is talking about here? The Lord is surrounded by these energies. So which are those energies? The 4 energies which is surrounding the Lord. So that energy, these energies are 4 in number: Prakriti, Purusha, Ahankar, and Mahat Tattva. This material creation, Prakriti, Purusha. Prakriti means this material nature, Purusha means the Supreme Lord. False ego means Ahankar. False ego means Ahankar, and the final is, the 4th one is Mahat Tattva. So these are the 4 energies of Krishna. Then there are 6 because you see there are different energies of the Lord, and the Lord is always surrounded by his different energies. So Shodasha means the 16 energies, not 6 actually. Pardon, it's 16. Shodasha means 16. So 16 energies. So what are these 16 energies apart from these 4 energies? So the 5 senses, the 5 working senses, then the 5 elements of this creation: earth, water, fire, air, ether. The 5 senses are eyes, ears, nose, tongue, skin. The 5 working senses are hands, legs, speech, rectum, and genitals. And along with these 15 elements, the 16th element is the mind. Okay. So 16 and 4 we saw earlier. So these are different energies. And then there are 5 sense objects, 5 kinds of sense objects: Roop, Ras, Gandh, Shabd, Sparsh, form, taste, smell. Shabd means speech, and Sparsh means touch. So these are 5 sense objects, 5 different kinds of sense objects. So all these combined together, they come to total 25 elements. So all these elements, their origin is Krishna. So these energies form these 25 elements. They form this whole material creation. And this material creation is actually, who is the creator or who is the source of this material creation? That is the Supreme Lord. So he is the source of everything. No living entity can be equal to or greater than the Lord. A person can, by performing penances and austerity, can develop special qualities, but he can never become the supreme controller. He may control, he may be able to influence few things, he may be able to control few things after undergoing penances and austerities, but that the Lord, he is the source of everything, and all these different energies. And
No one can match the Lord. No one can become greater than or equal to him. It's very important. We must know, because sometimes people think that by performing penances and austerities, I can become the Lord, like the Lord. No, it can never happen. No one can become God. God is God. Human beings are human beings. Animals are animals. So no one can become God. That is impossible. So sometimes people think by performing yoga, by performing charity and all this, we can become God. No, God never becomes God. God is God under all circumstances. God cannot be produced in a mystic factory. No, God is God under all circumstances. So these are all different things which Lord Brahma is seeing. Now text 18, shloka number 18. तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतानंद परिप्लुतांतरो हृष्यत्तनुप्रेम भराश्रुलोचनः ननाम पद पादाम्बुजमस्य विश्वसृग् यत्पारमहंस्येन पथाधिगम्यते. तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्यत्तनुप्रेम भराश्रुलोचनः ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वधृग् यत्पारमहंस्येन पथाधिगम्यते. Now, translation. Lord Brahma, thus seeing the personality of Godhead in his fullness, became overwhelmed with joy within his heart, and thus in full transcendental love and ecstasy, his eyes became full with tears of love. He thus bowed down before the Lord. That is the way of the highest perfection for the living being, Paramhansa. Now you see. So when Lord Brahma had darshan of the Lord, what did he do? So tad darshan ahlad pariplutantaro. Darshan ahlad. Ahlad means to become extremely blissful and joyful. So when Lord Brahma saw the Supreme Lord in this way, he became darshan ahlad. With darshan of the Lord, by seeing the Lord, he became extremely joyful, extremely blissful. And then Hrishyat Tanu Prema Bharashva Lochana, his eyes filled with tears. Tears started coming from his eyes. You see, tears come at two times. One, when we are in great fear or anger, or when we are distressed or depressed. Otherwise, ordinarily, in the material world, that is how tears come. In anger, anxiety, fear, when you lose someone, out of some misery. But tear also comes when we meet our loved one. These are called tears of love. So Lord Brahma, he started shedding tears of love before the Supreme Lord. He started, tears came in his eyes. Nanama Padambujamasya Vishwasrig. And he is the Lord of the universe. Vishwasrig. Nanama Padambujam. And he then, Nanama means to bow down like a stick. That is called Dandavat. Dandavat means like a stick, you fall down. So Lord Brahma, like that, bowed down before. So he bowed down like a stick
to pay dandavat, to pay obeisances to the Supreme Lord, with eyes filled with tears. And Asya Vishvadrig, Vishvasrig, Srig means creation. So Vishvasrig means the creator of the universe. So Lord Brahma bowed down before the Supreme Lord. Yat param hansiyena pathadhigamyate. And that is how, that is to be followed by patha adhigamyate. Anyone who wants to see the Lord, they must follow the example of Lord Brahma. All the liberated souls in the world, that is what is mentioned here by Shukdev Goswami, that all the pure devotees of Krishna must follow the footsteps of Lord Brahma. That is why Srimad Bhagavatam is called as Paramhansa Samhita. You see the word which is used in the shloka, the last sentence is Paramhansena. You can all see on your screen. So this material world is meant for, this Srimad Bhagavatam is meant for Paramhansas, to be understood by Paramhansas. And material world is meant to detach ourselves from this material world. So that's why Srimad Bhagavatam is called as Paramhansa Samhita. It is meant for Paramhansa. It is meant for pure devotees of Krishna. This material world is meant for non-devotees, and the spiritual world or Vaikuntha world is meant for pure devotees of Krishna. Because those who are impious, those who are non-devotees, they can never understand Krishna, they can never believe in Krishna. And they want to become Krishna, they want to become God. But no one can become God, as we see here. So Paramhansa stage of life is meant only for devotees of Krishna. So devotional life is Paramhansa life. Paramhansa means what? Those who know the difference between this material world and Krishna. What is the relationship between the Lord and this material world? They know that they are not supreme, Krishna is supreme. So such life, when a devotee is fully engaged in devotional service of the Lord without any cares, that is Paramhansa stage. So Lord Brahma is such a pure devotee, and not only Brahma, he saw all these pure devotees, Sattvatam, in the abode of the Lord, in the abode of Krishna, Vaikuntha Loka. So one cannot reach Krishna or the abode of Krishna by our space shuttles or spacecrafts. No, that is not possible. The only way to, if a person wants to see the Lord, if a person wants to associate with the Lord, if a person wants to have darshan of the Lord, the only way out is to follow the footsteps of Lord Brahma, because Lord Brahma is the greatest Paramhansa in this universe. So one should try to assimilate this knowledge about the Lord from his pure devotees through Srimad Bhagavatam, and then our path back to Krishna gets illuminated. That is what is mentioned here. Paramhansena padhadigamyate. Pathadigamyate. That this Paramhansa life is that life only. And every human being must follow this footstep of Lord Brahma. And if a person follows it, he becomes fortunate. He also becomes eligible to associate with the Supreme Lord.
So people want to, those who are too much materialistic in nature, for them it is very difficult to associate with God, because association to God is meant for Paramhansas. And a real Paramhansa means who follows in the footsteps of Lord Brahma, as we see here in this shloka. So Lord Brahma, when he sees the Lord, these are all different things Lord Brahma sees. And then in ecstasy, tears start coming from his eyes and he bows down before the Lord like a stick. So that is what we are seeing here. You can like, comment on the video. We'll stop here. We'll continue our discussion in the next session. Thank you very much. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया सुदर्शना जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा मैया जय निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो जय निताई गौरंगो निताई गौरंगो निताई गौरंगो जय निताई गौरंगो हरि बोल 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने इससे पहले वाले सत्र में
कि ब्रह्मा जी उन्हें भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने अपना स्वरूप उन्हें उनका दर्शन कराया उनको। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने भगवान को तो देखा, लेकिन भगवान ने अपने साथ साथ अपना जो वैकुंठ धाम है उसका भी दर्शन ब्रह्मा जी को दिया। तो हमने देखा था अपने पिछले सत्र में कि किस प्रकार ब्रह्मा जी देख रहे हैं भगवान को, उनके सारे पार्षदों को, और उन्होंने देखा कि भगवान सारे भगवान जैसे ही दिखते हैं, चतुर्भुज, चमकते हुए, स्त्रियां, लोग सारे भक्त भगवान के, साथ ही साथ लक्ष्मी माता जो अपने सारे पार्षदों के साथ भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रही हैं। तो ये सारी चीजें ब्रह्मा जी ने देखी। अब आज हम देखते हैं कि और क्या क्या ब्रह्मा जी को दर्शन हुए वैकुंठ लोक में। 15वें श्लोक से शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिम श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार्हरादिभिः स्वपार्षदाग्रये परिसेवितं विभुम्। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रये परिसेवितं विभुम्। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Lord Brahma saw in the Vaikuntha planet the personality of Godhead, who is the Lord of the entire devotee community, the Lord of the goddess of fortune, the Lord of all sacrifices, the Lord of the universe, and who is served by the foremost servitors like Nanda, Sunanda, Prabala, and Arhana, his immediate associates. अब आप इसका हम अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में भगवान को देखा, जो पूरे सारे भक्तों के भगवान हैं, लक्ष्मीपति हैं, यज्ञों के पति हैं, और पूरे जगत के पति हैं, जो अपने बहुत ही शुद्ध भक्तों के द्वारा सेवित हैं, जैसे नंद, सुनंद, प्रबल और अरहण, जो भगवान के शुद्ध भक्त और उनके पार्षद हैं। अब आप देखिए, तो ब्रह्मा जी ने क्या दर्शन किए, अब हम यहाँ देख रहे हैं। कुछ तो हमने पिछले सत्र में देखा था, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ददर्श तत्र अखिल सात्वताम पतिम। ददर्श का मतलब देखना। तो क्या देखा ब्रह्मा जी ने? तत्र अखिल सात्वताम पतिम। अखिल सात्वताम, सात्वत का मतलब होता है भगवान के शुद्ध भक्त, उन्हें सात्वताम कहते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उन्हें सात्वत कहा जाता है। और भगवान क्या है? सात्वताम पतिम, शुद्ध भक्तों के भगवान है, शुद्ध भक्तों के स्वामी है। पतिम का मतलब स्वामी। श्रेय पतिम, यज्ञ पतिम, जगत पतिम। और किस किस के स्वामी है भगवान? तो श्रेय, श्रेय मतलब लक्ष्मी माता के स्वामी है, यज्ञ पतिम यज्ञों के स्वामी हैं, और जगत पतिम पूरे जगत के स्वामी हैं। ठीक है। सुनंद नंद प्रबलार अर्हणादि भी, और जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जगत पतिम, क्योंकि भगवान जगत पति हैं, तो जितने भी शुद्ध भक्त हैं भगवान के, सुनंद नंद प्रबलार अर्हणादि भी, so ये जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो उनके नाम दिए गए हैं, जिसमें चार के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, सुनंद नंद प्रबल अरहणा। ये चार शुद्ध भक्त हैं और ये मिल के भगवान की सेवा कर रहे हैं लगातार, बिना किसी रुकावट के। तो ये सारे लोग मिलके भगवान की सेवा कर रहे हैं। स्व पार्षदाग्रह परिसेवितम विभुम।
स्वपार्षदाभ्रे, तो ये चारों और इनके सारे पार्षद माता लक्ष्मी के साथ, माता लक्ष्मी अपने साथ सारे पार्षदों को ले, पार्षद अग्रय इन सब के साथ भगवान की सेवा, परिसेवितम विभम, महा ये सारे महान जो भगवत लोग हैं, सात्वत यानी भक्त लोग हैं, ये सब मिल के भगवान की सेवा कर रहे हैं। बाबा आप देखिए, इस श्लोक में एक चीज समझना बहुत आवश्यक है। आप देखिए, जब ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है कि क्या देख रहे हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे विषय वस्तु है, वो ये है कि भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते। आप कभी भी भगवान को अकेले नहीं देखेंगे। भगवान हमेशा, भगवान की चाहे जो भी लीला हो, भगवान कृष्ण की लीला हो, भगवान राम की लीला हो, जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान कभी भी अकेले नहीं दे होते हैं। तो भगवान कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे आपको। चाहे भगवान की कोई भी लीला हम उठा लें, मंदिरों में उठा लें, भगवान हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं। ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वो अपने सारे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं। तो अखिल सात्वताम, अखिल सात्वताम का मतलब होता है कि जो भगवान है वो सात्वत मतलब जितने भी शुद्ध भक्त हैं भगवान के, और यहाँ पे उनका नाम भी लिया गया है, सुनंद, नंद, प्रबल, अरहण। तो ये सब मिला के जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो लोग स्वपार्षदाग्रह परिसेवितम विभुम, वो अपने पार्षदों के साथ मिलके भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। विभु मतलब भगवान परम पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण, तो इनकी सेवा में सब लगे हुए हैं। ये सब प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कभी भी अकेले नहीं होते। भगवान का स्वभाव है कि वो हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, जो हम यहाँ पर इस श्लोक में भी देख रहे हैं। अब 16वां श्लोक। भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम, प्रसन्न हासारुणलोचनाननम, किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं, हितांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगासवम्, प्रसन्नहासारुणलोचनाननम्, किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजम्। पीतांशुकं वक्षसि लक्षितं श्रिया। अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं, ट्रांसलेशन। The personality of Godhead seen leaning favorably towards his loving servitors, his very sight intoxicating and attractive, appeared to be very much satisfied. He had a smiling face decorated with an enchanting reddish hue. He was dressed in yellow robes and wore earrings and a helmet on his head. He had 4 hands and his chest was marked with the lines of goddess of fortune. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो भगवान अपने भक्तों की तरफ उनका झुकाव था, और बहुत ही सुंदर और आकर्षक भगवान लग रहे थे, और वो बहुत ही संतुष्ट थे अपने भक्तों की सेवा से। उनका जो प्रसन्न चित्त जो स्वरूप है, उनका जो चेहरा है,
वो सजा हुआ था। भगवान पीत वर्णों में यानी पीले वर्णों में सजाए गए थे, और भगवान ने कुंडल और किरीट पहना हुआ था। उनके चतुर्भुज चार हाथ थे, और उनकी जो छाती है उस पे अ, लक्ष्मी माता के निशान बने हुए थे। अब आप देखिए, भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हम इसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार भृत्य प्रसाद, प्रसाद का मतलब प्रसन्न होना, खुश होना। तो सारे जो भृत्य हैं, मतलब भगवान के जितने भी दास हैं, जितने भी सेवक थे, जितने भी भगवान के भक्त हैं, प्रसाद अभिमुखम, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न थे, और इसीलिए अब उनका मुख जो था वो उनकी तरफ था, उनकी तरफ वो झुके हुए थे। दृग आसवम, और ये बहुत ही सुंदर छवि थी जो ब्रह्मा जी ने देखी। प्रसन्न हास अरुण लोचनाननम, और बहुत ही प्रसन्न कर देने वाले मुद्रा देखी ब्रह्मा जी ने। लोचना, हास अरुण लोचनाननम, तो भगवान और उनके सारे पार्षद जितने भी थे, वो सब लोग बहुत ही सुंदर हास अरुणा, बहुत ही मुस्कुरा रहे थे, बहुत हंस रहे थे। और अरुणम लोचनाननम, और उनके जो नेत्र थे भगवान के, वो कमल के पत्तों जैसे सुंदर सुसज्जित थे, भगवान और उनके भक्त दोनों के। किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम, चतुर्बाहु थे, मतलब चार भगवान की भुजाएं हैं, और उन्हें सर पे किरीट धारण किया हुआ था और कुंडली अपने कानों में। पीताम शुकम वक्षसि लक्षितम श्रिया, और भगवान का जो चेहरा था, जो उनका जो शरीर था, उसमें जो उन्होंने वस्त्र पहने थे वो पीतांबरी यानी पीले वर्ण के कपड़े पहने थे। तो अब आप देखिए, वक्षसि लक्षितम श्रिया, और लक्ष्मी माता भगवान की सेवा में अपने सारे पार्षदों के साथ मिलके भगवान की सेवा में, और भगवान के जो छाती है उस पे भी उनका निशान था लक्ष्मी माता का। तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान अपने सारे भक्तों से घिरे हुए हैं, अपने सारे पार्षदों के साथ हैं, विराजे हुए हैं। लेकिन भगवान का अब देखिए, इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि प्रसन्न हास अरुण लोचनाननम प्रसादा अभिमुखम, तो भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न तो बहुत ही प्रसन्न चित्त है, और बहुत ही आनंदित है, बहुत ही संतुष्ट है। आप देखिए, वो भी लिखा हुआ दृगासवम, प्रसन्न हास अरुण, और हंस रहे हैं, बहुत ही सुंदर भगवान की छवि आ रही है कि भगवान हंस रहे हैं। लोचनाननम, उनके जो लोचन है, उनके जो नेत्र हैं, वो बहुत ही सुंदर हंसते हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज इस श्लोक में अद्भुत है कि भगवान अपने भक्तों की तरफ देख रहे हैं, उनकी जो दृष्टि है, उनका जो झुकाव है अपने भक्तों की ओर है। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते, कभी अकेले नहीं होते भगवान, अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। और भगवान यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान अपने सारे शुद्ध भक्तों के साथ हैं, और उनकी तरफ वो झुके हुए हैं।
तो भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, भगवान इतना प्रेम करते हैं, यहाँ पे प्रेम दर्शाता है ये श्लोक, कि भगवान इतना प्रेम करते हैं कि वो किसी के आगे झुकते नहीं है, लेकिन अपने शुद्ध भक्त के सामने भगवान झुके हुए हैं। झुके होने का मतलब कि ऐसा नहीं कि झुके हुए हैं, लेकिन वो उनकी तरफ भगवान का झुकाव है। भगवान के लिए सब बराबर है। भगवत गीता में बताते हैं भगवान कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, कि मुझे ना तो किसी से द्वेष है, ना मुझे कोई प्रिय है, मेरे लिए सभी बराबर हैं। लेकिन, तो ये भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, लेकिन फिर भी भगवान का झुकाव अपने भक्तों की ओर होता है। ये भगवान का स्वभाव है, और वही हम इस श्लोक में देख रहे हैं। 17वां श्लोक। अद्यर्हणीया सनमास्थितं परम वृतं चतुष्षोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैस्वैरित इतरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामं रममाणमीश्वरम्। अद्यर्हणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुष्षोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगैस्वैरितरत्र चाध्रुवैः स्व एव धामं रममाणमीश्वरम्। ट्रांसलेशन, अनुवाद। The Lord was seated on his throne and was surrounded by different energies like the 4, the 16, the 5, and the 6 natural opulences, along with the other insignificant energies of the temporary character. But he was factual Supreme Lord enjoying his own abode. अब आप देखिए भगवान के, आप सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अध्य अर्हणीयम, आस्थितम परम। तो भगवान जो हैं, अर्हणीयम आसनम, अपने आसन पे विराजे हुए हैं, उस पे बैठे हुए हैं। और आस्थितम परम, और परम पुरुषोत्तम भगवान है, अपने परम आसन पे बैठे हुए हैं। ठीक है। वृतम चतुषोडश पंच शक्ति भी, और वृत चतु यानी भगवान की अलग अलग शक्तियों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं भगवान की? तो वृतम चतुः, 4। कौन कौन सी है? तो जीव, परमात्मा, ये भौतिक जगत महत्तत्व, और प्रकृति। तो प्रकृति पुरुष, प्रकृति का मतलब ये जो भौतिक जगत है वो, पुरुष मतलब भगवान, महत्तत्व का मतलब ये भौतिक जगत, और अहंकार, ये 4 चीजें। उसके बाद 16 और शक्तियों का यहाँ वर्णन है। षोडश, षोडश मतलब 16 शक्तियों का वर्णन है। तो वो कौन कौन से हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सृष्टि के 5 तत्व, और एक मन, ये सब मिला के 16 हो जाते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिया में आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियों में हाथ, पैर, तो इस तरह से ये 16 हुए। और इसके बाद 5 और शक्तियां हैं भगवान की, जिन्हें पंचभूत कहते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, गगन और अ, आकाश। तो ये 5 जो हैं, ये सब मिलाकर, सॉरी, ये जो 5 हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये विषय हैं, इंद्रिय विषय। तो ये कौन कौन से हैं? विषय वस्तु जो कहते हैं हम जिसे, तो ये भी 5 है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। तो इस तरह से ये सब मिला के 16 और 5 21 हो गया, और 4 25 हो गया। तो ये 25 जो सारे मिल के
ये भौतिक जगत बना हुआ है। ये 25 जो है इस सृष्टि के अंग मिलके भगवान की ये शक्तियां हैं जिससे ये पूरा भौतिक जगत बना हुआ है। और ये सारे जो 25 के 25 जो तत्व हैं वो भगवान की सेवा के लिए हैं। तो भौतिक जगत में उनके कारण, और ये सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो कोई तपस्या करके, योग विद्या पालन करके, बड़े बड़े काम करके भगवान नहीं बन सकता। तो भगवान, कोई भी भगवान बन नहीं जाता। भगवान कोई बन नहीं सकता। भगवान भगवान होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई तपस्या करके जंगल में जाके कुछ करके भगवान बन जाता है, नहीं। कोई भी भगवान बन नहीं सकता, भगवान होते हैं। भगवान भगवान होते हैं, मनुष्य मनुष्य होते हैं, जानवर जानवर होते हैं। तो भगवान कभी बनते नहीं है। वो कोई तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता। भगवान भगवान है। मनुष्य में कुछ शक्तियां आ सकती हैं भगवान की कृपा से, लेकिन वो भगवान नहीं बन सकता। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि योग विद्या पालन करके या कुछ भी पालन करके भगवान बन सकते हैं, तो ये गलत है। ये कोई नहीं बन सकता। भगवान हमेशा भगवान होते हैं, हर अवस्था में भगवान होते हैं। कभी आप देखेंगे नहीं कि भगवान राम भगवान कृष्ण भगवान बन गए, नहीं। भगवान भगवान होते हैं, हर अवस्था में वो भगवान होते हैं, और परम पुरुषोत्तम है। लेकिन भगवान पाए जाते हैं अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा। अपनी शुद्ध भक्ति से भगवान को हम पा सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि युक्तम भगय स्वैर इतरत्र चाद्रुव स्व एव धामन रममाणमीश्वरम। तो भगवान जो थे वो वहां पर अपने आसन में बैठ के, ये सारी शक्तियां भगवान की थीं, और सारे जो भक्त लोग हैं वो भगवान की सेवा में लगे हुए। तो भगवान बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में, बहुत ही आनंदित रूप में वहां पर विराज रहे थे। अब 18वां श्लोक। तदर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्यतनु प्रेम भराशुलोचन ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग यत्पारमहंस्येन पथाधिगम्यते। तदर्शनाह्लाद परिप्लुतांतरो हृष्यतनु प्रेम भराशुलोचन ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग यत्पारमहंस्येन पथाधिगम्यते। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Lord Brahma, thus seeing the personality of Godhead in his fullness, became overwhelmed with joy within his heart, and thus in full transcendental love and ecstasy, his eyes became full with tears of love. He thus bowed down before the Lord. That is the way of highest perfection for the living being, Paramhansa. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन करते ही आनंद से भर गए। उनका हृदय रोम रोम आनंद से भर गया, और इस भाव में आके उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, आंसू बहने लगे। और भगवान को उन्होंने दंडवत किया, भगवान के आगे झुके, उन्हें नमन किया। और यही परमहंसों का स्वभाव होता है। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे श्लोक में। कह रहे हैं कि तद दर्शन आह्लाद। आह्लाद का मतलब होता है बहुत ही आनंदित हो जाना, बहुत ही आह्लादित हो जाना। बहुत आनंद से भर गए ब्रह्मा जी जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए। और परिप्लुतांतरो, अंतर अंदर से भर गए, आनंद से पूरा हृदय भर गया उनका। हृष्य तनु प्रेम भरा अश्रु लोचना, उनकी आंखें जो है वो आंसू से भर गई। जब हम बहुत ही या तो दुख में होते हैं तो आंसू निकलते हैं, या जब हम भक्ति में, जब भगवान को दर्शन करते हैं, जब भगवान से प्रेम होता है तब भी आंसू निकलते हैं।
तो ये प्रेम के आंसू ब्रह्मा जी के निकलने लगे। अश्रु लोचना ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वश्री। तो भगवान जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो सृष्टि को बनाने वाले हैं, सृष्टि के रचयिता को ब्रह्मा जी ने ननाम पादाम्बुजम अपने सारे शरीर के साथ नमन किया, उनको दंडवत किया। यत् पारमहंसेन पथ अधिगम्यते। और कह रहे हैं यहाँ पर कि जो परमहंस लोग होते हैं वो यही मार्ग तो ये परमहंसों का मार्ग है, ये भागवत का मार्ग है। यहाँ पर परमहंस, आप देखिए अंतिम पंक्ति में पारमहंस ये न, तो भागवत पुराण को परमहंस संहिता कहा जाता है। ये परमहंसों के लिए बनी है, और सबसे बड़े परमहंस कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है। तो यही परमहंसों का स्वभाव है कि वो भगवान का जब दर्शन करते हैं तो वो आंसू से भर जाते हैं, भगवान को दंडवत करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ये परमहंसों का स्वभाव है। तो ये जो भागवत है, भगवान का दर्शन है, ये परमहंसों के लिए बना है। जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं, जो पापी लोग हैं, वो कभी भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते या भगवान तक नहीं पहुंच सकते, असंभव है उनके लिए। और इसीलिए भगवान तक पहुंचने का जो प्रारंभ है वो भक्ति से होता है, भागवत से होता है। यही गंतव्य, यही हमारा स्रोत है, और यही हमारा गंतव्य भी है। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का स्रोत। स्रोत, सॉरी, स्रोत नहीं, भगवान का जो स्वभाव है वो यही, कि वो हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के, उनके हैं भगवान जो है। तो कोई भी अपने यानों में, अंतरिक्ष यानों में भगवान तक नहीं पहुंच सकता। उसका एक ही मार्ग है, भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान की दिव्य तरीके से भगवान की सेवा करना। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो भी परमहंसों को पालन करेगा, जो भी ब्रह्मा जी का पालन करेगा, लेकिन पालन वही करेगा जिसे भगवान में श्रद्धा है, जिसे भगवान से प्रेम है, जिसे भगवान की भक्ति है, जिसमें। बाकी लोग तो पालन नहीं करेंगे पूर्णतः, लेकिन जो ये पालन करेगा ब्रह्मा जी के तरीके से, भगवान को, उसको दर्शन होंगे, और वो भी, और जैसे ब्रह्मा जी को जो आनंद मिला है वो सभी को मिल सकता है। क्योंकि भगवान को ऐसे पाना बहुत असंभव है, लेकिन बड़े आसानी से भगवान, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उन सबों ने मिल के भगवान की यहाँ पे सब लोग सेवा कर रहे हैं। और भगवान भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने भक्तों के भक्ति का आनंद ले रहे हैं, और साथ ही साथ उनके साथ व्यवहार भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब उन्हीं को पता लगेगा जो परमहंस है, क्योंकि भागवत का मतलब ही है पारमहंस संहिता। तो जो भी ब्रह्मा जी के पद चिन्हों पे चलेगा उसे भी भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान का दर्शन करते ही वो भी वही अनुभव करेगा जो यहाँ पर ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। आज ही अपने सत्र को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।